अच्छा चलें जी, आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। ओके, हाँ जी अमार, नाउ प्लीज़ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसको हम ऑटोमेटिकली कैसे डिप्लॉय करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसे ही है। Yes, sir. Yes, sir. So for instance, if you look at this, this this function or equation that we have here, इसको हमने automatically implement करने के लिए all we have to do is to implement this equation iteratively at each and every region. Region से मुराद ये है कि this red region centered at all possible pixels in the image. So ये जो एक red region है, this is of size 11 by 11 pixels and this has been Sir, centered at a particular location, for instance this one. और इस sir, slides given. Sir, slide shown here, sir. slide shown you over here. Just a minute. ठीक है, आई होप स्लाइड्स अब शो हो रही हैं। Yes, sir. ठीक है, so we have this red region and this is an 11 by 11 region which is centered at a certain pixel, for instance this one. तो हमने क्या करना है, we have to center such a region at every possible pixel in the image, and for that region basically, which is, so every pixel in the image can give rise to this red region, right? And then we have to analyze that region as to whether it depicts a corner or not. ठीक है, so for instance, at the moment the way it is depicted on this slide, we are analyzing this region. In other words, we are trying to ascertain whether this pixel here, the center pixel here, is a corner or not. So if we want to do this for every possible pixel that is present in the image, we have to center this local region at every possible pixel in the image. So for now we are doing it at this image, at this pixel here. Secondly, in order to then ascertain whether this pixel is a corner or not, we have to shift this local region, that is the red one, upward, leftward, rightward and downward, and presently we have shifted it upward and rightward as is depicted by this green region. ये वाला shift है, I of x plus u, y plus v. So uv is a two-dimensional shift which can go from -5 all the way to 5. Yani both of u and v can take on values ranging from -5 to +5. यही possible shifts हो सकते हैं. अदरवाइज अगर फर्दर इस रीजन को शिफ्ट करेंगे तो फिर इस ओरिजिनल रेड रीजन और फिर जो शिफ्टेड वर्जन है उसका यानी ग्रीन रीजन, इनके बीच में कोई ओवरलैप नहीं रहेगा, राइट? सो दिस इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल शिफ्ट दैट वी कैन हैव. तो ये जब हम शिफ्ट करेंगे तो हम सम ऑफ एब्सोल्यूट सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस बेसिकली ले रहे हैं, जिसके अंदर ये तो हो गया स्क्वायर डिफरेंस एट ईच पॉसिबल लोकेशन एक्स वाई, ठीक है? और फिर हर पॉसिबल लोकेशन एक्स वाई के ऊपर जो जो वैल्यू मिलेगी उसको सम अप कर देंगे. सो दिस इज़ नथिंग बट अ सम ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंसेस. यू कैन ऑल्सो डू अ सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंसेस. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑपरेटर या जो स्क्वायरिंग ऑपरेटर है, दे आर जस्ट देयर सो दैट ये जो वैल्यूज़ हैं ये मतलब जो नेगेटिव वैल्यूज़ फॉर इंस्टेंस हो सकती हैं वो कैंसिल आउट ना करें पॉजिटिव वैल्यूज़ को, क्योंकि हमने सिर्फ एक एब्सोल्यूट डिफरेंस या स्क्वायर डिफरेंस को मेजर करना है. हमने ये नहीं देखना कि ओरिजिनल इमेज में जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, ओरिजिनल रीजन में, सॉरी रेड वाले जो रीजन है उसमें वैल्यू ज़्यादा है या ग्रीन वाले में ज़्यादा है, इसको हमने नहीं देखना. हमने ये देखना है कि डिफरेंस क्या है. ठीक है, सो होपफुली ये चीज़ क्लियर है. Yes, sir. आपका क्लियर क्वेश्चन होपफुली ठीक है एड्रेस हुआ है. और इसको ज़ाहिर हमने ऑटोमेटिकली करना है, मतलब यू हैव टू डू दिस फॉर एवरी पॉसिबल रीजन. And in fact, we also discussed the fact that if we do this for every possible region or every possible pixel in the image, तो उसका जो नुकसान है, in other words, a naive implementation would see us performing 5 billion multiplication operations for a simple 480 by 640 image, जो कि मेरे ख्याल है 0.3 megapixel image होती है. Why? Because सबसे पहले basically we are trying to calculate the number of multiplications that we need to do using this weighting function, and in order to do that we have to perform window width which is 11. so window width square का मतलब है 11 by 11. so 11 by 11 का एक window है यानी red window, उसको हमने again u और v जो shifts दिए हैं
So each of uv goes from -5 all the way to +5. In other words, 11 possible values हैं u की और 11 possible values हैं v की. So 11 into 11 is the number of shifts that we can have for any given window of a certain width. 11 square by 11 square. उसके बाद we have to perform this operation, this one, at each pixel in the image. And if the image is of size 640 by 480, तो फिर हमारे पास जो number of pixels हैं, number of regions हैं जो उस image से हम extract कर सकते हैं, that is 640 by 480. So this is the number of multiplications that we need to do. इसके अंदर हमने जो एडिशंस हैं ये वाले, इनको हमने अभी टेक इनटू अकाउंट नहीं किया. सो ऑब्वियसली दिस इज़ कंप्यूटेशनली वेरी प्रोहिबिटिव, एंड इन ऑर्डर टू implement it more efficiently, there is another approach that we are now going to study. साढ़े 12 मेरी क्लास हो रही है, 12:30 बजे आ जाए. मेरी क्लास हो रही है. So the method that we have to discuss is basically where we approximate this surface function E of uv using Taylor series approximation, and try to come up with a more efficient approach to implement it. ठीक है. The reason is that the ideal surface that we want is something like this, which should have a unique minimum. इस चीज़ को हमने last time भी डिस्कस किया था. हमारे पास 3 types of regions थे या 3 types of points थे. एक कॉर्नर था, एक एज था, और एक यूनिफॉर्म रीजन था. तो इन 3 रीजन्स के लिए हमें देखना ये है कि कौन सा कॉर्नर है, एंड वी एसरटेन्ड दैट दिस इज़ अ कॉर्नर. और कॉर्नर के लिए जो हमारे पास ई ऑफ यू वी जो फंक्शन है, इट शुड लुक लाइक दिस. इन अदर वर्ड्स, इट शुड हैव अ यूनिक मिनिमम. सो इफ वी वांट टू अप्रॉक्सीमेट दिस using some function, then one function is a paraboloid, something like this, which has a unique minimum. So if the E of uv surface attains this form, then we can say, okay, there is a unique minimum, and therefore this point is a corner. So this is what we want to do. So in order to do that, we first recall that there is something called a Taylor series approximation, and basically we can approximate any given function via its Taylor series, which is to basically approximate it as an infinite series of its derivatives at a single point A. So for instance, if we are trying to approximate f of x, then which is this blue function over here. So this blue function is f of x, and we want to approximate it using the Taylor series by adding on more and more terms. And these are the terms that we would add. So f of a is the derivative of the function at point A, at any given point A. So for instance, a could be 0, and f of a plus f dash of a. So f of a is the function evaluated at A. F dash of a is the derivative of the function evaluated at point A. Then f double dash is the second derivative of the function evaluated at point A, and so on. So the more terms we keep on adding, so for instance, right here we are adding 2 terms, then 3 terms, then 4 terms, and so on. So the more terms we keep on adding, the better approximation we are able to do. So at this point, what we will do is to approximate the image I of xy, rather a certain local region in the image, using its Taylor series approximation. ठीक है. तो सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं. So for instance, what we can do is to approximate I of xy using its Taylor series approximation. So what we will do is, with reference to the Taylor series approximation, so this says to evaluate any Taylor series approximation of I of xy would be that we evaluate it at a certain point A. Okay, at a certain specific point we have to evaluate the function. So let's write I of x plus u y plus v. This is the same as saying
I of xa ya, where xa and ya are specific points in the local region. x और y जो था वो local region का center है, uv shifts हैं. So जब एक specific shift हम देंगे तो एक specific point बनेगा xa ya in the local image region. So we are evaluating the function at certain specific points I x plus u y plus v. उसके बाद we have to add the first derivative divided by 1 factorial and then write x minus a. So इसके लिए because it happens to be a two-dimensional function, so we will do it for both dimensions. So सबसे पहले partial derivative of I with respect to horizontal direction. So this is the derivative evaluated at x plus u, यानी जो x a था एक पॉइंट के ऊपर evaluation की थी, and this has to be multiplied with x minus x plus u. ठीक है. उसके बाद so ये this is exactly this term here, ये वाला जो term है f dash a divided by 1 factorial times x minus a. So this is the first derivative evaluated at x plus u divided by 1 factorial and times x minus a. So a is x plus u. Then we have the partial derivative with respect to the y direction evaluated at y plus v, y equals y plus v, y minus y plus v. And of course we have higher order terms. So right now we are not going to take into consideration the higher order terms because we are obviously it gets complicated, so we want to simplify it and we want to focus on lower order terms. So if we further work this out, हमारे पास आएगा I of x plus u y plus v plus now x minus x plus u is it's just minus u, ठीक है, because x और x cancel हो जाएंगे, so we get minus u. So I should write minus partial I by partial x evaluated at x equals x plus u times u. Similarly, the next term we have is of course minus partial I by partial y with the derivative evaluated at y plus v times v. अब इसके अंदर हम ये करेंगे कि to basically simplify things. By the way, ये हमारे पास because we are not taking into consideration higher order terms, we are just ditching them. So I will place an approximation here. Now this is no longer equal to. This is just an approximation of I of xy because we are not considering higher order terms. So this is I x plus u to further simplify the notation हमने x equals x plus u, y equals y plus v को ditch किया है. उसकी वजह ये है कि बेसिकली हम एक तो सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं नोटेशन, और दूसरा अगर हमारे पास एक डेरिवेटिव है किसी भी फंक्शन का, फॉर इंस्टेंस ये एक फंक्शन है और हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में हम डेरिवेटिव या चेंज फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है. सो दिस डिफरेंस इज ऑफ कोर्स डेल टी एंड दिस डिफरेंस हियर इज ऑफ कोर्स डेल एफ, ठीक है. सो इट डजेंट रियली मैटर, यानी जो डेरिवेटिव की फंक्शन जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है डी एफ डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स लिमिट del t tends to 0 del f del t, ये इसकी definition है. But when we evaluate the derivative, it doesn't really matter if we say that the derivative is evaluated at t1 or we say that the derivative is evaluated at t2, where t2 happens to be t1 plus del t. तो ये यहाँ पे यही चीज़ थी हमारे पास
कि x equals x plus u, यानी we are evaluating at point x plus u, or we evaluate the derivative at point x. फ़र्क नहीं है, यानी we evaluate it at t1 or we evaluate it at t2 which is t1 plus del t. दोनों के ऊपर डेरिवेटिव एक ही है बेसिकली अगर देखा जाए तो, ठीक है, बिकॉज दिस डेरिवेटिव इज सॉर्ट ऑफ यू नो समथिंग शेयर्ड बाय पॉइंट्स t1 एंड t2. सो हमने वो जो नोटेशन है x इक्वल्स x प्लस यू उसको हमने डिच करा दिया है, एंड ऑल्सो दिस हेल्प्स अस सिंप्लीफाई द नोटेशंस. सर जी सर आप ग्रुप में लिंक दोबारा भेज देंगे, कुछ बच्चों को मिल नहीं रहा चैट टीम्स की. मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, आप उसी से मेरे ख्याल एम एस टीम्स को ज्वाइन कर सकते हैं. और दूसरा सर थिंक, उससे बच्चे को हो नहीं रहा सॉरी, सर. ग्रुप में मतलब 6-7 लोग कह रहे हैं उनसे हो नहीं रहा वहाँ पर. अच्छा जस्ट गिव मी अ मिनट. इसमें एक ये भी इशू है कि जो आप लोगों को डिग्री 40 के ग्रुप के ऊपर एम एस टीम्स के कोड्स भी भेजे गए होंगे कल या परसों, उनसे भी यू कैन बेसिकली ज्वाइन द एम एस टीम्स. बहरहाल मैंने मीटिंग का लिंक भी भेज दिया है, सो होपफुली इससे फ़ायदा हो जाएगा. और मैंने जो इस कोर्स की टीम्स का जो कोड है वो भी शेयर कर दिया, टीम्स का कोड, ठीक है. तो होपफुली इन दोनों तरीके में से किसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. अच्छा, so continuing, this is basically our Taylor series approximation for I x y, that is I x plus u y plus v minus partial I by partial x times u minus partial I by partial y times v. इसको जब हम प्लग इन करेंगे इस यहाँ पे I of x y की जगह, ठीक है, जब हम I of x y की जगह इसको प्लग इन करेंगे तो होगा ये कि I of x plus u y plus v इस I of x plus u y plus v से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड देन वी विल बी लेफ्ट विद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. वी विल बी लेफ्ट विद पार्शियल I बाय पार्शियल x टाइम्स u प्लस पार्शियल I बाय पार्शियल y टाइम्स v, ठीक है. एंड व्हेन वी डू दैट ये चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है. I of x y प्लस u टाइम्स पार्शियल I बाय पार्शियल x प्लस v टाइम्स पार्शियल I बाय पार्शियल y माइनस I of x y. सो I of x y जो है वो एक्चुअली जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है. I of x y की जगह आप रिप्लेस करें या I of x प्लस u y प्लस v की जगह ये रिप्लेस कर दें. मैंने मतलब I of x प्लस u y प्लस v की जगह आप I of x y प्लस पार्शियल I बाय पार्शियल x टाइम्स u, जब ये दोनों टर्म्स दूसरी तरफ जाएंगे इक्वेशन के, तो बेसिकली इसकी वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है. एंड देन व्हेन वी डू दैट दिस इज व्हाट वी गेट, ठीक है, दिस इज व्हाट वी गेट. Now this is the same as u ix plus v iy the whole thing squared because these two will cancel out, these two terms just cancel out, and this can be written as this, ठीक है. So why can it be written like this, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं. So to get from this to this is a bit difficult,
but if we just use this part to get to that part, then it would be easier. Okay, so in order to do this, what we can do is to have uv ये आई एक्स बाय द वे इट इज़ द शॉर्ट हैंड फॉर पार्शियल आई बाय पार्शियल एक्स, ये हमने लास्ट स्लाइड में यहाँ पे बता भी दिया है. ठीक है, एंड आई एक्स स्क्वायर इज पार्शियल आई बाय पार्शियल एक्स टाइम्स पार्शियल आई बाय पार्शियल एक्स. ठीक है, दिस इज़ नॉट द सेकेंड डेरिवेटिव. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव्स, दीज आर नॉट सेकेंड डेरिवेटिव्स. सो दिस इज़ नॉट the horizontal derivative of the vertical derivative. No, no, no. This is partial I by partial x times partial I by partial y. यानी दोनों horizontal vertical derivatives का ये product है. Similarly, this is the square of the horizontal derivative and this is the square of the vertical derivative. ठीक है? So ix square times ix iy ix iy y square. So this matrix times uv. ठीक है, बेसिकली मैंने ये जो समेशन है इसको फिलहाल इग्नोर करके फर्स्ट आई वांट टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू दीज थ्री यू कैन से वेक्टर्स, उसके सो दैट वी कैन गेट समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो इसके करने के लिए मतलब अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो you will be easily be able to find that it's the same as what is given on the slide. So this is a 1 by 2 vector and this is a 2 by 1 vector. So now they have consistent dimensions and we can simply multiply them. And this basically just gives us u square ix square. Okay. So this is what we have and this is the same as इन दोनों टर्म्स को हम कंबाइन कर देंगे. ठीक है, you get u square ix square plus 2 times uv ix iy plus v square iy square, which is the same as saying u ix plus v iy, the whole thing squared. ठीक है, so u ix plus v iy, the whole thing squared, which is the same as this. ठीक है, अच्छा, अब as far as this summation is concerned, ये चीज़ यहीं से आई है और this is basically being carried forward to this point here. यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि these are products of first derivatives, these are not second derivatives. ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क.
सर इसके पीछे इंट्यूशन रिपीट कर दें कि ये पूरा प्रोसीजर हम कर क्यों रहे हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन आई एम जस्ट कंसर्न कि बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं या नहीं कर गए। सर इसमें काइंडली ये भी बता दें कि सर ये कैसे अब कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू जो पिछला वाला अच्छा, हमने किया है। ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह बता देते हैं, बट प्लीज़ गिव मी लाइक 2 और 3 मिनट्स। आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग, और हम ये करेंगे कि एक नई मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं जो कि स्केड्यूल्ड होगी, क्योंकि मुझे कंसर्न है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं इस मीटिंग को। ठीक है, सो प्लीज़ जस्ट गिव मी लाइक 2 और 3 मिनट्स, और यहीं पे इंशाल्लाह मैं दोबारा से एक मीटिंग स्केड्यूल करता हूँ, हम उसको ज्वाइन करेंगे और हम इन दोनों क्वेश्चंस को आंसर करके फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ठीक है।